बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। सर आपका माइक म्यूट है। थैंक यू। सो आई वाज टॉकिंग। स्लाइड से आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि पहली स्लाइड से आपकी आवाज़ नहीं आई थी, तो इसलिए जो आपने बताया वो नहीं पता। अच्छा अच्छा, चलें शुरू से कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देगा। तो ये रोज़ा आम रोज़ा नहीं है, ये वो रोज़ा है जो कि इंसान ने अल्लाह के रास्ते में लगाया हो। अब अल्लाह के रास्ते में बहुत से हो सकते हैं मामलात। अब घर से निकलें तो मैं भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए निकले हैं, वो भी अल्लाह का रास्ता होगा। जब आप जिहाद के लिए निकले हैं, और जिहाद भी कई किस्म के हो सकते हैं, तो वो भी अल्लाह का रास्ता होगा। अल्लाह की इबादत के लिए मैं भी आप जाते हैं, हज रोज़ा वगैरह करने के लिए घर से निकलते हैं, तो वो भी एक अल्लाह का रास्ता हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे अल्लाह का रास्ता वो होता है जिसमें आप अल्लाह की मखलूक की बेहतरी और भलाई के लिए निकलते हैं, चाहे वो दुनिया की बेहतरी हो या आखिरत की बेहतरी हो। तो ऐसा रोज़ा स्पेशल रोज़ा होता है, और उस रोज़े की ये फजीलत है कि दोज़ख की आग उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर दी जाती है। अल्लाह ताला हमें
समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। So today we have it's a lecture 15, which is the last lecture of this course, and the title is Software Architecture Process. So software architecture, the purpose is that if you are asked to create software architecture for any particular application, then what kind of process you should follow. And in this context, it's an important lecture. In this lecture, you'll find some new ideas and few important guidelines. So first of all, we are going to start with the role of software architect. So software architect is supposed to define the software architecture. That's why it's important to understand the role of software architect. So if you will be asked to create an architecture, it means that you will be in a role of software architect. So what kind of activities an architect is required to be performed? So first of all, the architect must be versatile. He should be an experienced person, and he should have a versatile personality and experience. So because software architect works with the requirements team, the architect plays an important role in requirements gathering by understanding the overall systems, needs, and ensuring that appropriate quality attributes are explicit and understood. तो रिक्वायरमेंट टीम के साथ इसलिए उसको काम करना पड़ता है क्योंकि उसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफाइन करने के लिए he needs appropriate quality attributes. क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को सामने रख के उसने आर्किटेक्चर डिफाइन करना होता है. दैट्स व्हाई he is required to work with requirement team so that he should be able to extract the quality attributes from overall requirements. Then the architect works with various application stakeholders. Architect plays a pivotal role and liaison role by making sure that all the application stakeholders needs are understood and incorporated in the design. तो उसने जब रिक्वायरमेंट टीम के साथ काम करेगा तो वो ये भी ध्यान रखेगा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब की नीड्स को कवर कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया. फॉर एग्जांपल, सिस्टम एडमिन would be a stakeholder because system admin has to deploy that application after it has been developed. So similarly, there would be some business stakeholder and there would be some technical stakeholder. So he is required to see that all stakeholder needs are being incorporated in the design. Thirdly, software architect leads the technical design team. So all the design team, which if we talk about module level designs or user interface design or database design, all design teams are supposed to be work under a software architect. So therefore, the architect leads all these teams for defining the application architecture, which is a design activity,
And the architect works with project management team as well for correctly defining the planning, estimates, budgets, and schedule. So in this context, the message of this slide is that the role of software architect is pivotal. He should be versatile. He has to work with various stakeholders, various technical teams, as well as development team stakeholders and project managers, etc. Now, architecture development process. This is a three-step process, as you can see on the slide. This is basically an architecture development process. So that there are three major steps or activities. The first one is to determine the architectural requirements. So there is a difference between normal software requirements and architectural requirements. So that we will see. But these requirements are also, you can say that these requirements are the subset of overall system requirements. And it's the job of architect to extract architecture requirements from overall system requirements. So after determining the architecture requirements, the architect designs the architecture of the application, and after designing the architecture, very important validation activity is performed so that one can ensure that the architecture is correctly designed and it can meet all the architectural requirements of the stakeholders or architecture requirements of the application which are derived from the stakeholders. In case if we find during validation process that there is some problem in the design, then either some architecture requirements are required to be refined after negotiations with the stakeholders, or only and then iteratively design will be corrected and then validation will be performed. So it is an iterative three-step architecture development process. And this process can be scaled for small or large projects simultaneously. It can work for all kind of projects, whether it is small or it is a large project. So first of all, the first step is to determine architecture requirements, and the title is determine architecture requirements. Sometimes these are also called architecturally significant requirements, or sometimes these are called architectural use cases. So these are some synonyms for architecture requirements, and these are essentially nothing but the quality, attributes, and the constraints. Sometimes we call quality, attributes, and constraints as non-functional requirements, but these are generally non-functional requirements, or most of the time these are considered as architectural requirements. So here in this diagram you can see that in order to determine the architecture requirements, there are two areas which are required as an input. Either you get input from the functional requirements, and you also get input from the stakeholder requirements. So from these two requirement documents, the architect
determines or filters out architectural requirements, and then architect documents those requirements as architecture requirements. So let's see a few examples to understand these different kinds of requirements. So let's see examples. For example, typical reliability quality attribute requirement could be like this. For example, you find some statement written like this in the major requirement document, that communications between components must be guaranteed to succeed with no message loss. So this kind of requirement is basically a kind of quality requirements, and we can place it under a reliability quality attribute. तो अब इसमें आप ये देखें कि क्या कह रहे हैं हम, communication between component must be guaranteed. So it will affect the whole system. It is not regarding particular module, but it is affecting the overall system. So, and basically such type of requirements further help us to define the overall architecture of the application, because we have to see that what kind of architecture we should require, so that we can guarantee that there will be no message loss. So we have to adopt to some special type of architecture. Some architecture requirements are also constraints. तो ये भी आप एक्सट्रैक्ट करेंगे. You will look for some constraints कि constraints कौन-कौन से डाले हुए हैं overall जो requirement documents है. One of the example of constraint could be the system must use existing IIS based web server. IIS stands for Internet Information Server Web Server, which is a Microsoft technology, and use active server page to process web requests. तो ये एक तरह का कंस्ट्रेंट है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज को यूज करना है. तो इट इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट, बिकॉज these both are Microsoft product. Internet Active Server Pages works on IIS based web servers. So it is a kind of constraint which is limit our options to one particular technology. Constraints impose restrictions on architecture and are almost always non-negotiable. अब अगर क्लाइंट ने हमें ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी सम बिजनेस रीजंस, इसकी वजह से इस तरह की कंस्ट्रेंट क्लाइंट हमारा लगाएगा. तो जनरली इस तरह के कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो नॉन नेगोशिएबल होते हैं, और आपने फिर जब क्लाइंट आपको इस तरह के कंस्ट्रेंट लगा देता है तो फिर आपने उसके अंदर ही काम करना होता है. So these constraints limit the range of design choices an architect can make. Okay, let's see few more examples to understand the quality attribute requirements. So here this table has two columns. One is quality attribute column and other one is architecture requirement. So for example, there are certain examples of architectural requirements and corresponding quality attributes that can be assigned to any particular requirement. For example, a performance quality attribute example could say like this, could be defined like this,
that application performance must provide sub 4-second response time for 90% of request. यानी कि हम ये एक लगाना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट के जो रिस्पांस टाइम है वो 4 सेकंड से कम होना चाहिए हर सूरत में फॉर 90% ऑफ द रिक्वेस्ट. फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 100 requests and out of 100 90 requests must be their response time must be less than 4 seconds. So it is an example of a performance quality attribute. Let's see the other example. All communication must be authenticated and encrypted using certificates. तो हम इसमें बता रहे हैं कि जी हमने सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन के लिए सर्टिफिकेट्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है. सो दिस इज़ an example of a security quality attribute. Let's see another example. The server component must run on a low-end office-based server with 512 MB memory. तो अब ये भी एक तरह का कंस्ट्रेंट है. मे बी क्लाइंट के पास ये कोई हाई एंड डिवाइसेस अवेलेबल ना हो तो क्लाइंट में इम्पोज सच टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट कि जी हमारे पास सर्वर पड़ा हुआ है जिसकी 512 MB सिर्फ मेमोरी है. सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट कि आपने इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज के अंदर ही रह के आपने अपनी एप्लीकेशन का डिज़ाइन करना है या आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है. Let's see another example. The user interface component must run on a internet browser to support remote user. तो अब ये बड़ा अब मतलब जो यूज़र इंटरफेस बनाना है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बनानी बल्कि ब्राउज़र को यूज़ करना है यूज़र्स के लिए. तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ गोइंग टू डिफाइन कि हमने वेब बेस्ड हमारा डिज़ाइन होगा. हमारा रिच डेस्कटॉप एप्लीकेशन वाली टेक्नोलॉजीज हमने यूज़ नहीं करनी बल्कि हमने वेब टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है. तो अगेन वेरी it is such kind of requirement which will impact the whole architectural design of the application. So we may state it as a usability quality attribute. Let's see another example. The system must run 24/7/365 with overall availability of 0.99, that is 99%. तो ये भी we may classify this requirement as availability quality attribute. Let's see another example. No message loss is allowed and all message delivery outcomes must be known within 30 seconds. तो हम ये कह रहे हैं कि जी मैसेज लॉस तो एक भी अलाउड नहीं है और साथ ही जो उसका मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं हुआ विद इन 30 सेकेंड्स पता चलना चाहिए कि मैसेज 30 सेकेंड से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए. तो वी आर इम्पोजिंग सम कंस्ट्रेंट. वी मे क्लासीफाई इट एज अ रिलायबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट. Then let's see another example. The application must be able to handle peak load of 500 concurrent users during enrollment period. Again, we are imposing some sort of constraint that peak load of 500 concurrent users should be handled at one time, and we may place अंडर स्केलेबिलिटी. हो सकता है कि नॉर्मल में आपको 50 कंकरेंट यूजर्स तक काफ़ी हो लेकिन पीक लोड हैंडल करना है आपने कि पीक लोड पे जो हमारी एप्लीकेशन है शुड स्केल अप टू हैंडल 500 कंकरेंट यूजर्स. Then the last example, the architecture must support phased migration from a current 4th generation language version to .NET system technology solutions. Again, very important
architecture requirements which will determine the technology of the application which should be adopted, and we may place it under a modifiability quality attribute. So these are just examples to give you the idea that requirements and architecture requirements, these are different, but these requirements, architecture requirements, are extracted from the overall requirements. So you may call these requirements as a subset of overall requirement document, क्योंकि requirement document में functional requirements भी होंगी और आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होंगे, कंस्ट्रेंट्स होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो ये जो आर्किटेक्ट है उसका काम है कि उसने उसको केयरफुली पढ़ना है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को, और उसमें से ऐसी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है विच मे इम्पैक्ट द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन. Let's see some examples of constraints. Constraints are again important क्योंकि constraints भी हमें जो है हमारे आर्किटेक्चर की राह मुतय्यन करने के लिए यूज़ होंगे. फॉर एग्जांपल ये एक सगी रिक्वायरमेंट अगर लिखी हुई हो, द टेक्नोलॉजी मस्ट रन एज अ प्लग इन फॉर माइक्रोसॉफ्ट BizTalk as we want to sell this to Microsoft. So it is a kind of business constraint because we need to develop something on Microsoft technology, but there are some business reasons behind. Another example of constraint, the system must be written in Java so that we can use existing development staff. तो ये भी एक लॉजिकल रिक्वायरमेंट हो सकता है, कंस्ट्रेंट हो सकता है, एंड वी मे प्लेस अंडर अ डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट. Third example, the first version of this product must be delivered within 6 months. So it is a kind of time constraint, so we may place under a schedule constraint कि जी आपने इसके अंदर ही फर्स्ट वर्जन डिलीवर करना है. Then another business constraint requirement, we want to work closely and get more development funding from Mega Hugh-Tech Corporation, so we need to use their technology in our application. So because they want to adopt the technology of Mega Hugh-Tech because they intend to get business from them, so we may place it under a business constraint. Okay, up till now we saw a few examples of architectural requirements. Firstly, we saw some quality attributes, and then we saw the constraints. So quality attributes and constraints, these are the two defining categories which overall give us a direction to define or create our architectural document, and obviously then these help us to define our architecture. So any question up to now? Any question from the class? I hope you are not sleeping. कितना है in by 18? I hope you are not sleeping. मैंने ब्रेक लगा लिया. जी I hope clear है normal requirements और architectural requirements में difference. Yes sir. Yes sir. That is important. मकसद यही था, एक दो स्लाइड्स में थोड़ा मैंने टाइम भी ज़्यादा लगाया. So with the help of examples, ये उसके अंदर छुपी हुई होंगी, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा ये उसके अंदर ही एम्बेड हुई होंगी. आर्किटेक्ट का काम है इनको केयरफुली स्टडी करके उनको एक्सट्रैक्ट आउट करें
ताकि वहाँ से फिर you should be able to create or get the pointers for defining the architecture. Then there is something about the requirement priorities as well, and you must have gone through in your requirement engineering subject that how we handle the priorities of the requirements. All requirements are not equal. In fact, we may categorize these requirements as high, medium, and low. High category requirements are those which application must support, and medium requirements are those which are needed to support at some stage. At some later stage, these are also required to be fulfilled in order to mark the development complete. So it has to be done, but it can be delayed or postponed to some extent, some time. But its completion is needed to declare your application development complete. And other one may be placed as a low, and this is part of requirement which is a kind of a wish list. अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर भी गुजारा हो जाएगा. So sometimes requirements gets some conflicts. One requirement may conflict with the other requirement. For example, reusability of components in the solution versus rapid time to market. Generally, अगर हम कोई ऐसे कंपोनेंट बनाना चाहें which we want to keep reusable, then it means that we are required to develop generic components. जो components generic बनाएंगे हम वो ज़्यादा reusable बनेंगे, और जो components हम generic नहीं बनाएंगे, specific task के लिए बनाएंगे, those will be less reusable. लेकिन इसका मतलब यह है कि जेनेरिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको, ज़्यादा वो डिटेल वर्किंग करनी पड़ेगी, तो इट विल टेक मोर टाइम, एंड देयर माइट बी अ कंस्ट्रेंट ऑफ रैपिड टाइम टू मार्केट. तो इसलिए अब आप यहाँ पे आर्किटेक्ट का रोल होगा कि ही शुड नेगोशिएट विद द स्टेक होल्डर्स एंड देन make some consensus that which requirement should be given more priority. Making components generalized and reusable always take more time and effort. Secondly, expenditure on COTS, commercial off the shelf products, versus increased development effort and cost. So, for example, we purchase some COTS for our product, then we have to spend money, and otherwise if we don't buy the component, we may develop it ourselves, but then our time and effort will be more. So again, a kind of conflicting requirements may come across, because code products mean you have to develop less code, but they cost money. So such type of conflicts are required to be resolved by the architect. But anyhow, it is a design and it is not meant to be easy. Designing is a creative activity, and creative work is always, we can't say that it is easy. It has to follow a specific path
and the level of difficulty, it is obvious. Okay, so this was an overall a broader discussion to make you understand about the architectural requirements, their priorities, and some resolution, some ideas about resolution of conflicts if they occur between different requirements. Now, as we initially saw that we saw a three-step architectural process, and now we are going to discuss the second step. The first step has been covered, that was determine architectural requirements, and some of the modalities are seen in the previous slides. Now we are going to cover the second step, that is architectural design. And design steps are iterative, and risk identification is crucial output of the design. So during design, we have to identify our risks as well. So here you can see what activities we should perform during our architectural design. So we need to choose, after architecture requirements have been defined, then based on those requirements, our architect is required to choose an architectural framework. It may be inferred from some patterns or styles, and then components are required to be allocated, and then some architectural views and documents will be created. So the first decision that we are required to take is that what kind of architectural framework or a pattern would be suitable for this application. And then we are going to put some components in that particular pattern. So let's start discussion on how to choose architecture framework. Choosing the architectural framework. Choose an architectural pattern or patterns that suit the requirements. There is no magic formula. Analyze the requirements and quality attributes. Sir, slides नहीं move करी. Sure. I am on slide number 13. Are you all on 13? 13 पर हैं सारे? Slide number 13. जी सर. Yes, sir. चलें ठीक. Okay. So we were talking that we are now trying to cover that how to choose an architectural framework, and we choose some sort of architectural pattern or patterns that suit our requirements. There is no magic formula. We have to do some hard work. We have to analyze the requirements critically, and we need to see the quality attributes which are supported by each pattern, and then we have to make the choice. Complex architectures require creative blending of multiple patterns. Complex architecture require creative blending of multiple patterns. तो ये जरूरी नहीं है मैं आगे कुछ पैटर्न डिस्कस करूंगा, हो सकता है किसी एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा पैटर्न भी यूज़ करने पड़ जाए हमें. So let's see few examples of architectural patterns. We will see N-tier client server pattern, messaging pattern, publish subscribe pattern, broker pattern, and process coordinator pattern. So these patterns
After studying these patterns, then you will come to know why I have taken the previous two lectures, because these patterns are inferred from the previous two lectures, the discussion which we have made in the previous two lectures. So after going through the previous two lectures, now you'll find it the discussion of these patterns quite easy. So let's go one by one. We start from N-tier client server pattern. Here you can see that there are, for example, 4 tiers: client tier, web server tier, business logic tier, data management tier, and client tier. There might be various web clients. In lower tier, there might be some web server. Then there might be some application server and databases or database servers. So such type of layered architecture is sometimes called N-tier client server application. एक चीज इसमें ध्यान में रखें कि अगर हम जब क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं, so conceptually each lower layer is a server for the upper layer. It means that the level 1 tier is client of level 2 tier, level 2 tier is client for level 3 tier, and level 3 tier is client of level 4, that is the lowermost database tier. So it goes like this. So what are the main features of this pattern? The first feature, important feature, is that it supports separation of concerns. Because presentation, business, and data handling logics are clearly partitioned in different tiers. So separation of concerns के अपने फायदे हैं, because you can implement each concern separately. You can hire the experts of each concern separately, and you can assign the task to them separately. So once we divide our tasks, it's a common practice to divide a complex problem into small multiple problems and then integrate those problems. Same is here. Second important characteristic of this architecture is that these tiers provide synchronous communication. Synchronous communication between tiers, and synchronous means synchronous request and reply. Each tier waits for the response from other tier before proceeding. तो सिंक्रोनस में यही होता है, अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है वेब सर्वर को, तो क्लाइंट वेट करेगा उस वक्त तक जब तक वेब सर्वर उसको रिप्लाई नहीं करता. तो हो सकता है इंटर्न वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर से रिक्वेस्ट करे, एप्लीकेशन सर्वर डेटा सर्वर से रिक्वेस्ट करे, बट ये सारा प्रोसेस होगा, वापस रिप्लाई वेब सर्वर पे आएगी, वेब सर्वर फिर वापस भेजेगा, देन द वेब क्लाइंट विल प्रोसीड फर्दर. So this is a typical characteristic of an N-tier client server pattern, that these tiers are generally have a synchronous communication with each other. The third important feature of this client server pattern is flexible deployment. Why flexible? Because there is no restrictions on how a multi-tier application is deployed. All tiers could run on same machine, or each tier may be deployed on its own machine. तो हर एक को अलग मशीन पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, एक मशीन पे डिप्लॉय कर सकते हैं, एक मशीन पे 2 भी कर सकते हैं, एक मशीन पे 2 3 कर सकते हैं. So you have a flexibility. So this is again an important feature of N-tier server client server pattern, that you get a flexibility in deployment. Any question on this slide?
जी चलें आगे. Yes, sir. Okay, now let us further analyze n-tier client server pattern in the context of quality attribute analysis. The purpose is to see that how n-tier client server pattern is going to handle specific quality attributes. For example, first of all, let's take availability. And if we want to achieve availability by using n-tier client server architecture, then what are the options available with us? So let's see, it's an important discussion. The servers in each tier can be replicated. तो हम हर लेयर के अंदर जो सर्वर्स हैं या मशीन्स हैं उन्हें हम रेप्लिकेट कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग आवर अवेलेबिलिटी so that if one fails, others remain available. Overall application will provide a low quality of service until the failed server is restored. तो होगा क्या कि आपका अवेलेबल रहेगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 4 हमने रेप्लिकेशंस क्रिएट किए हैं तो उससे ये होगा कि आपको फॉर एग्जांपल अगर 1-2 सर्वर फेल हो जाते हैं हमारे, तो हमारे 2 सर्वर इंटैक्ट रहते हैं, तो हम अवेलेबिलिटी रहेगी, एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है. तो इसका मतलब है कि इफ़ यू आर आस्क्ड to ensure availability by if you are using n-tier client server pattern, then the option for you is a replication in each layer. Secondly, failure handling attribute. How we can handle failures if we are using n-tier client server architecture. If a client is communicating with a server that fails, most web and application servers implement transparent failover. This means that a client request is without its knowledge redirected to live replica server that can satisfy the requirements. तो अगेन ट्रांसपेरेंट फेल ओवर जब आप रेप्लिकेशन करते हैं तो उसके साथ ही ट्रांसपेरेंट फेल ओवर भी हैंडल वो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है टू हैंडल द फेलियर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सर्वर्स. Thirdly, modifiability. How good is this architecture in modifiability attribute? The separation of concerns enhances the modifiability. जैसे हमने पीछे देखा कि इसका जो फंड बहुत बुनियादी फीचर होता है, that is that it separates different concerns. लेकिन जब हम separation of concerns achieve करते हैं तो as a result we also achieve modifiability. We can modify each layer separately and incorporate a new layer, modified layer, anytime. As the presentation, business and data management logic are all clearly encapsulated, each can have its internal logic modified in many cases without changes rippling into other tiers. तो पॉइंट ये है कि आप एक मल्टीपल टीयर्स हैं, किसी भी टीयर को आप एक मॉडिफाइड टीयर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. सो इट मीन्स दैट मॉडिफाइंग एनी टीयर, any part of the application is pretty manageable and easy. Then what about the performance? If you want to achieve performance, and what is the level of performance for n-tier client server pattern? This architecture has proven high performance. It has proven high performance. Key issues to consider is the amount of concurrent threads. कि आपके जो मल्टीपल कितने थ्रेड्स हैंडल कर सकते हैं आपके ये n-tier आर्किटेक्चर
और डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जब वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कितने थ्रेड्स की कम्युनिकेशन आपने अलाउ की है या सपोर्ट कर रहा है आपका सर्वर. द स्पीड ऑफ कनेक्शंस is also an important factor between the tiers and amount of data that is transferred. तो अगर आपने परफॉर्मेंस अचीव करनी है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कंकरेंट थ्रेड्स को हैंडल करना है, आपने फाइन ट्यून करना है, स्पीड ऑफ कनेक्शंस 10G का लगा रहे हैं, 1G का लगा रहे हैं, 100 Mbps के कनेक्शंस लगा रहे हैं, कौन से कनेक्शंस लगा रहे हैं आप, that is important, and the amount of data that is to be transferred. As always with distributed system, it makes sense to minimize the calls needed between tiers to fulfill each requirement. तो ये हो सकता है कि जब हम एन टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डिप्लॉय करें तो once we go into further detailed design तो हम ये करें कि जो टीयर्स के दरमियान है वो नंबर ऑफ कॉल्स को कम करें. हमारा डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए जितनी उसमें कोहेसिवनेस होगी विद इन ईच टीयर, जितनी हमारी टीयर कोहेसिव होगी उतनी हमारी कॉल्स टीयर टू टीयर कॉल्स कम से कम होंगी. तो जितनी टीयर्स को कोहेसिव बनाएंगे अपने डिज़ाइन में उतना हमारी कॉल्स कम हो जाएंगी और उतना हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस हम बेहतर कर सकते हैं. Then what about scalability? If you want to achieve scalability for this pattern, then what are the possibilities? As servers in each tier can be replicated and multiple server instances run on same or different servers, the architecture scales out and up well. तो scalability achieve करना इस आर्किटेक्चरल पैटर्न में मुश्किल नहीं है. इट्स क्वाइट इजी एंड इन प्रैक्टिस data management tier often becomes a bottleneck on the capacity of the system. For example, data tier में आपने एक लो एंड डेटाबेस लगा दी है तो वो फिर कंकरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने में इशू हो सकता है. जनरली ये होता है कि आपकी बाकी टीयर्स की कम्युनिकेशन आप आराम से थ्रेड्स वगैरह बढ़ा लेते हैं, लेकिन डेटाबेस टीयर में बॉटलनेक बन जाता है अगर बहुत ज़्यादा आपकी कंकरेंट कॉल्स आ रही हैं डेटाबेस सर्वर्स को. तो देन आपको देखना पड़ेगा कि जी डेटाबेस सर्वर्स कितने कंकरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है. सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन दैट योर डेटाबेस सर्वर should be carefully selected. So up till now we have discussed one architectural pattern and we have analyzed its quality attributes. We have done its quality attributes analysis and we saw its important features that as an architect you should have in mind, so that you should be able to make appropriate choice out of multiple patterns. Excuse me, sir. Okay. जी. सर ये जो लास्ट स्लाइड पे परफॉर्मेंस का क्वालिटी एट्रीब्यूट है, ये तो जब जितने टीयर्स ज़्यादा हो रहे हैं सर तो ये तो परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए क्योंकि टीयर टू टीयर कम्युनिकेशन है और है भी सिंक्रोनस. तो ये अगर सिंगल टीयर से इसको कंपेयर किया जाए तो इसको हम हाई परफॉर्मेंस क्यों कह रहे हैं इसको? तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस तो इन कंपैरिजन कम होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा टीयर्स इन्वॉल्व हैं, कम्युनिकेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है. लेकिन अगर मशीन सेपरेट होंगी तो हर एक की अपनी प्रोसेसिंग भी तो है ना. फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉजिक टीयर में उसकी अपनी कोई प्रोसेसिंग होगी. अब उसको सेपरेट अगर मशीन मिल जाए और डेटाबेस की अपनी प्रोसेसिंग होगी, उसको सेपरेट मशीन मिल जाए तो सारी मशीन कंकरेंट अपनी प्रोसेसिंग करेंगी तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बढ़नी चाहिए ना. क्या ख्याल है? इस तरह भी सोचा देखा इसको कंसीव किया जा सकता है. और फिर परफॉर्मेंस बढ़ने की एक रीज़न ये भी है कि इट इज़ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आप जो है वो इमीडिएट रिप्लाई रिस्पॉन्स अपने वापस लेनी होती है. तो दीज आर द रीजंस. लेकिन है कि परफॉर्मेंस जैसे हमने बात की है कि परफॉर्मेंस अगर बढ़ानी है आपने तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो
इंटर टीयर कनेक्शन की स्पीड है वो आपकी बेहतर हो। अगर वो बेहतर नहीं होगी तो परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। और अगर डेटा बहुत ज़्यादा टीयर टू टीयर डेटा बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब भी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। तो अगर अपने कंकरेंट थ्रेड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 1000 कंकरेंट यूजर्स एट अ टाइम, तो अगर कंकरेंट थ्रेड 1000 से नीचे ले गए तब भी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं केयरफुली अपना डिज़ाइन करके, देन यू कैन अचीव हाई परफॉर्मेंस। वजह उसकी यह है कि मल्टीपल मशीन्स हैं, इसका मतलब है कि यू हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग पावर्स अवेलेबल टू यू। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव जी द सर, थैंक आंसर। थैंक यू। ओके जी, तो लेट्स कम to the second architectural pattern, and it is a messaging pattern. As you can see, there might be multiple clients, there might be multiple servers, but these clients and servers are not directly connected. Rather, there is a queue in between, which is a level of indirection between clients and servers. So client does not know directly about the servers and server doesn't know about the client. There is an intermediary between the two, kind of two devices. So what are the important features of this pattern? The first and foremost important feature is asynchronous communication. Client sends request to the queue where the message is stored until an application removes it. तो एक तो यह है कि इस पैटर्न में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। Secondly, you can achieve configurable quality of service. The queue can be configured for high speed, non-reliable or slow reliable delivery, जैसे हमने MOM टेक्नोलॉजी में देखा था कि हम डिफरेंट हाई स्पीड और लो स्पीड विद मोर रिलायबिलिटी वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। क्यू ऑपरेशंस कैन बी कोऑर्डिनेटेड विद डेटाबेस ट्रांजैक्शंस एज वेल। तो जो डेटाबेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनके साथ भी ये ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड आपके मैसेज सेंडिंग भी हो सकती है। अगेन वी सॉ इट इन MOM मिडलवेयर टेक्नोलॉजी। सो you can say that this pattern is based on MOM technology. Then another important feature is loose coupling, because there is no direct binding between clients and servers, and you can, so low coupling का फायदा क्या है? Client can disconnect itself without any issues, server can connect disconnect, servers कम ज़्यादा कर सकते हैं, clients कम ज़्यादा कर सकते हैं। so आपको लूज कपलिंग से ये फायदे मिल सकते हैं। okay, let's analyze the quality attributes of this architectural pattern. First of all, availability. If you want to get high availability by incorporating this pattern, then what options do you have? Physical queues with some logical names can be replicated. So the answer is replication of queues. By replicating the queues, we can achieve high availability. And across different messaging server instances, when one fails, clients can send messages to replica queues. Then what about failure handling? Again, if we create replica queues, we can enhance our capability against failures.
And what about modifiability? Messaging is inherently loosely coupled, and this promotes high modifiability as clients and servers are not directly bound through an interface, and changes to the format of a message sent by client may require changes to the server implementation, and self-describing discoverable message formats can help reduce this dependency on message formats. तो बेसिकली अगर मैसेज को मॉडिफाई करना पड़ जाए आपको तो फिर मसला होगा, क्योंकि मैसेज मॉडिफाई करेंगे तो इसका मतलब है कि मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी आपको डालनी पड़ेगी। जनरली क्यूज के अंदर नहीं होती वो। मैसेज को मॉडिफाई करने के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि उसके लिए हम फिर एक दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। क्या नाम है उसका? क्या आपने मिडलवेयर कौन सी बताई थी जिससे मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम? जी कौन सी मिडलवेयर टेक्नोलॉजी है जिससे मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है? अभी क्विज भी होना है आज आपका, क्यों नहीं याद आपको? सर ये क्विज में आ रहा है? ये तो नहीं आ रहा, लेकिन पिछले लेक्चर्स तो होंगे ना। ये तो कनेक्टेड है ना पिछले लेक्चर से। तो एक हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट, एक हमने पढ़ा था MOM, उसके बाद उसके ऊपर वाली लेयर कौन सी है? सर्वर्स हैं। उसके बाद कौन सा आता है? मैसेज ब्रोकर्स। ठीक है, मैसेज ब्रोकर्स बेसिकली मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी मैसेज ब्रोकर्स में होती है। और उसके बाद आ जाते हैं आपके बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो अगर हमें मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इसमें मैसेजिंग सर्वर में, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये अच्छे नहीं होते। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको फिर सर्वर्स और क्लाइंट लेवल पे एंड्स पे आपको मैसेज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करनी पड़ेगी। क्यू ट्रांसफॉर्मेशन जनरली नहीं हैंडल कर रही होती। तो ये केयरफुल होना पड़ेगा आपको इफ़ यू मेक यूज ऑफ दिस आर्किटेक्चर, दैट इन केस the change in case of changes to the format of the message sent by the client may require changes to the server implementation, क्योंकि इन बिटवीन जो क्यू है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज नहीं होती, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं होती क्यूज। उसके लिए फिर ये हो सकता है कि हम ये टेक्निक यूज़ करें कि जो मैसेज आता है वो अपना मेटा डेटा भी साथ ही ट्रांसमिट किया जाए, ताकि सर्वर उस मेटा डेटा को रीड करके और उसके मुताबिक फॉर्मेट को एडजस्ट करे अपना। इस किस्म का सेल्फ डिस्क्राइबिंग और डिस्कवरेबल मैसेज फॉर्मेट की कोई कैपेबिलिटी हमें इंजेक्ट की जा सकती है। सो दिस इज हाउ मॉडिफाइबिलिटी रिलेटेड इश्यूज कैन बी हैंडल्ड विद दिस पैटर्न। And now what about performance of this architecture pattern? Message queuing technology can deliver thousands of messages per second. So there is no reliability. Non-reliable messages is faster than reliable. ये हमने पढ़ा था, ये ऑलरेडी हमने MOM आर्किटेक्चर पढ़ा था। And with the difference so if we want to achieve performance, then we may resort to non-reliable message, which will be faster than reliable. And what about scalability? Queues can be hosted on communicating endpoints. यानी कि हम मिडल में क्यू रखने के बजाय हम एंड पॉइंट्स यानी कि सर्वर्स पे एंड क्यूज को इम्प्लीमेंट कर दें या क्लाइंट साइड पे क्यूज ले जाएं।
और मे बी रेप्लिकेटेड, ये भी कर सकते हैं हम कि इसको हम रेप्लिकेट कर दें, क्यूज के क्लस्टर बना लें. With this we can achieve highly scalable solutions. So it ends our second architectural patterns. So here we take a break, और ब्रेक करते हैं यहाँ पे. we'll restart with the third one, that is publish subscribe pattern. और इसमें ये है कि now आपको क्विज भी होना है. क्विज के लिए हम टाइम रख लेते हैं 7 बजे का. यू हैव 50 मिनट्स, प्लीज गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स. और ये है कि हम 7 बजे क्विज ऑन हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा LMS पे, एंड यू विल हैव 10 क्वेश्चंस, यू विल गेट 7 मिनट्स. और फिर हम रिज्यूम करेंगे लेक्चर्स आफ्टर मगरिब, मे बी एट अराउंड 7:35 या 7:40, and then we will cover other part of the lecture. So let me switch off, stop the recording.